My name is Aditi Joshi. I am the assistant professor of Biyani Group of College. Today I am deliver my topic on the behalf of Guru KP or Biyani Group of Colleges. So my topic is term symbol and microstate. The first topic is why we need term symbol. Why we need a term symbol? Because the electronic configuration is not the sufficient or necessary condition for the describe all the spectrochemical properties of electron. So we need a term symbol. Basically, what is the term symbol? What is the microstate? The microstate is nothing. It is the different arrangement, different energy arrangement of the electrons or a state in an orbital. So first, during the calculation of microstate, we should determination two type of condition. The first, Pauli exclusion principle should not be avoided. That means one electron present in one orbital. There never be two electrons present in the same orbital. And the second is unique microstate should be included. That means the microstate should not be repeated. The rule number first, for the equivalent configuration, when n and l are same, then microstate formula will be n factorial upon r factorial n minus r1 factorial. N is equal to number of maximum electron in orbital and r is equal to number of given electron in orbital. For example, if we are taking the example of p1 configuration, then the maximum electron in a p orbital will be 6 and the given configuration in 1 electron. So here we can calculate the microstate in the p1 configuration, which will be 6. The second rule number is applied for non-equivalent electronic configuration. That means जहाँ पर n और l की वैल्यू सेम ना हो, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो सेम फॉर्मूला है, बस इसके लिए जैसे एन ए फैक्टोरियल अपॉन आर ए फैक्टोरियल एन माइनस आर ए फैक्टोरियल एन बी फैक्टोरियल आर बी फैक्टोरियल एन बी माइनस आर बी फैक्टोरियल. फॉर एग्जाम्पल p1 एंड d1 कॉन्फ़िगरेशन. p1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, यह हमने 6 माइनस 1 किया. यहाँ पे डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकता है, ये हमने 10 अपॉन 10 माइनस 1 फैक्टोरियल किया. तो टोटल यहाँ से हमारी जो माइक्रोस्टेट आई वो आई 60. तो हमने इस तरीके से हमने दो रूल्स देख लिए, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए और नॉन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए. वी आर कमिंग टू द रूल नंबर 3. When term is given, then how to calculate the term symbol or microstate. Then here formula is 2s plus 1 multiplied by 2l plus 1. 2s plus 1 is equal to spin multiplicity and l is equal to orbital angular momentum, which is 3 for f orbital, and spin multiplicity is given 3. So here we calculate microstate. 3 into 3 is equal to 9. So for f3 term, the microstate will be 9. Rule number 4 is when term symbol is given, then how to calculate microstate. Then the formula is m is equal to 2j plus 1. Here j is the spin orbital angular momentum. In this case, the j is given to the 3 by 2. So we can calculate the microstate, which is equal to 4. The rule number 5 is when degeneracy is given, then how to calculate microstate. Then the formula is 2s1 into degeneracy. The degeneracies can be determined by these following parameters, which is called Mulliken symbols. A is stand for the singlet, E stand for the doublet, and T stand for the triplet. Here the example is 6A1G. Here A is given, that means it is singlet, तो degeneracy यहाँ की 1 हो जाएगी और जो microstate will be 6. Now after the calculation of microstate, we move to the term. What is term? Term is nothing but it is the energy level which is arises due to interelectronic repulsion. There are 3 type of interaction takes place: SS coupling, LL coupling, and LS coupling. SS coupling, that means spin coupling. LL coupling, that means orbital coupling, and LS coupling, that means spin orbital coupling. When the atomic number is greater than 30, then the order will be LS coupling is more dominant over LL coupling, and LL coupling is dominant over SS coupling. But when the atomic number is less than 30, then the order will be spin coupling, which is greater than LL coupling and which is greater than LS coupling. There are some rules which are used for the calculating of ground state term symbol. First, the state of the largest S will be lowest energy term. That means अगर सिंगलेट और ट्रिपलेट दो स्टेजेस हमें दी हुई है, तो हमेशा ट्रिपलेट स्टेट हमेशा ही डोमिनेंट होगी सिंगलेट स्टेट पे, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट के लिए S की वैल्यू 1 होगी, जबकि सिंगलेट के लिए S की वैल्यू 0 होगी. सेकंड रूल इज इफ टर्म हैज सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. दैट मीन्स जब S की वैल्यू सेम है तो हमें मूव करना है L की तरफ. तो the term which have highest value of L will be lowest energy value term. That means if we have two terms, one is F3 and the other is P3, then the F has L value will be 3 and P have L value is 1. So
F have large value of L, so it will be ground state term symbol. And the next rule is if term has same L and S value, that means अगर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है और उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी सेम है तो हमें दो केस बन सकते हैं. अगर हमें जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस देन हाफ फील्ड है तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ J, the term which have lowest value of J will be ground state term symbol. But if the given electronic configuration which is more than half filled, then the value of J which will be highest will be ground state term symbol. Now we take an example for the understanding the term symbol, that is P1 electronic configuration. The electron is singlet in phase. So first we calculate S, that means spin orbital angle, spin momentum, which is half for one electron. Now we calculate spin multiplicity, which is 2s plus 1, 2 into half plus 1 is equal to 2. L for the p orbital will be 1, and then we calculate J, which is spin orbital angular momentum, LS coupling. J is L plus 1 to L minus 1. तो यहाँ हम करेंगे हाफ प्लस 1 से हाफ माइनस 1. तो हमें यहाँ J की दो वैल्यूज़ मिली हैं 3/2 और हाफ. अब हमें यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि हम J की कौन सी वाली वैल्यू को पुट करेंगे. लेकिन हम जो रूल नंबर 4 पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड हो तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो हम जानते हैं कि जो P1 ऑर्बिटल के लिए लेस देन हाफ फील्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हाफ फील्ड से कम है, और हाफ फील्ड से कम है तो हम यहाँ J की लोएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे. सो द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल J विल बी हाफ. सो नाउ वी represent the ground state term symbol as 2s plus 1 Lj. L, which is 1, is equal to for p orbital, so we use p. Then 2s plus 1 will be 2, and the ground state term symbol के लिए जो J हमारा निकला वो निकला हाफ. तो इस तरीके से हमने टर्म सिंबल कैलकुलेट करना सीखा है, और इस तरीके से हम किसी भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ होगा उसके लिए हम टर्म सिंबल कैलकुलेट कर सकते हैं. सो thank you. Thanks for the watching video. Please like, comment, share, subscribe, and visit our website gurukpa.com. Thank you.